Hey gamers, गेमिंग की इस दुनिया में pirates often seek to bend the rules for their own advantage. But क्या हो जब गेम itself decides to fight back? आइए जानते हैं आज की वीडियो में जहां पे pirates found themselves outwitted by the very own game they decide to exploit. ये कुछ ऐसे गेम्स है which turn the tables on the pirates by trolling them. Hey all, मेरा नाम है आइजैक. Welcome back to TangoTube and let's start with the video. But उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हो और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में लाइक और कमेंट भी कर देना. मिरर्स एज एक फर्स्ट पर्सन एक्शन एडवेंचर पार्कोर स्टाइल गेम है जहां पे टाइमिंग और स्पीड काफी मायने रखती है. टू प्ले दिस गेम यू नीड टू बी फास्ट एंड नो व्हेन टू जंप. बट अगर आप इस गेम को पायरेट करते हो यानी इफ यू यूज एन इलिजिटिमेट कॉपी ऑफ द गेम देन सरप्राइज सरप्राइज. Basically the game loads up perfectly fine and everything seems normal. But as soon as आप अपने पहले बिग जंप के पास पहुंचते हो, you realize that you are moving incredibly slow, making the jump impossible. और ये हमेशा होता रहेगा unless you buy the legal copy of the game. This tactic was a clever way for the developers to discourage piracy of the game. बैटमैन आर्कम असैलम भी कुछ सिमिलर टाइप का ट्रोलिंग करता है पायरेट्स के साथ. अगर आप इस गेम का पायरेटेड वर्जन यूज करते हो तो बैटमैन की एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी ग्लाइड डिसेबल हो जाती है. अब ये कोई बग या ग्लिच नहीं है बट डेवलपर्स ने इंटेंशनली ऐसे कोड किया है टू डिस्करेज पायरेसी. नाउ इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील अनलेस यू रियलाइज दैट द एब्सेंस ऑफ दिस एबिलिटी सीवियरली इंपैक्ट्स योर गेम प्ले एज ग्लाइड काफी एसेंशियल है टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर दिस ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट. And there are some places within the game itself from where you will fall to your death if you don't have this ability, जो pirates को frustrate और limit करता है to enjoy full experience of the game. इस नेक्स्ट गेम में गेम प्ले पे कोई इफेक्ट नहीं होता है बट ये गेम कुछ अलग तरीके से पायरेट्स को ट्रोल करता है. एलन वेग इफ इलीगली ऑब्टेन्ड. गेम शुरू करते ही एन इलिजिटिमेट कॉपी ओनर लिटरली बिकम्स अ पायरेट एज गेम का कैरेक्टर स्पोर्ट करता है एक पायरेट आई पैच थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द स्टोरी, मॉकिंग प्लेयर दैट दे हैव पायरेटेड द कॉपी ऑफ द गेम. एडिशनली गेम आपको ऑन एवरी लोडिंग स्क्रीन याद दिलाएगा टू बाय द रियल कॉपी. इवन दो ये इतना हार्मफुल नहीं है फॉर द गेम प्ले एज अदर्स ऑन द लिस्ट, इट्स सर्टेनली हिलेरियस. Now this next game took the war against piracy a little too far. Crisis Warhead अगर आप illegally डाउनलोड करते हो and you play it, as soon as you pick up your first weapon, hundreds of chicken will start shooting out of your gun instead of bullets, जो कि enemies को literally zero damage देता है, जो कि काफी funny है. Now you're totally relied on hand-to-hand combat, as आप कोई भी गन उठाओ, छूटेंगे तो चिकन ही, which makes it very very difficult for a pirate to complete the game and storyline. The Witcher 2 के डेवलपर CD Projekt Red ने काफी क्रिएटिव वे ढूंढ निकाला to troll the pirates. As you already know that the Witcher series एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है and pirates wants to get their hands on the game without paying for it. But ऐसा करने के consequences बुरे हो सकते हैं, काफी बुरे. Basically गेम में upon finding a love interest instead of a young and beautiful woman, you will find your character making out with an old lady. और ये throughout the game चलेगा wherever there is a makeout cutscene forcing the pirate to watch a granny con and embarrass himself throughout the game duration, unless you are into that shit. Serious Sam 3 took piracy away to serious and introduced a giant scorpion that is invincible. So अगर आप इस गेम की pirated कॉपी खेलते हुए पकड़े जाते हो तो after defeating some opponents in the very first mission, you will soon meet a giant scorpion that is literally invincible. इस monster के पास super speed है, ये आपको कहीं भी ढूंढ सकता है and he can kill you instantly and it is literally impossible to defeat this monster. The only way to get rid of him is to get a legitimate copy of the game. इस गेम का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है टू कॉम्बैट पायरेट्स. एज सुन एज आप पायरेटेड कॉपी डाउनलोड करते हो एंड बूट अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, द हैवी पिक्सेलेटेड ब्लर इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू द होल गेम, जो कि गेम को काफी हद तक डिफिकल्ट बनाता है फॉर द पायरेट्स टू फिगर आउट कैरेक्टर्स एंड इंटरैक्ट विद द गेम एनवायरनमेंट, मेकिंग इट लेस इंटरेस्टिंग. If you are going to pirate this game, you will definitely going to regret it. Five Nights at Freddy's गेम की pirated copy if you install and play, हर बार आप इस गेम को लॉन्च करोगे you will be greeted with a random jump scare every now and then. और अगर आप तंग हार कर गेम को बंद भी करने की कोशिश करते हो तो एक और jump scare देखने को मिलेगा with a clear message to get the legitimate copy of the game. Pretty scary and to the point in my opinion. So कैसी लगी ये लिस्ट बता देना कमेंट सेक्शन में. And remember guys, piracy will likely get you trolled and could be embarrassing in every way. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एज आई कम विद अ न्यू वीडियो और साथ ही में एक रैंडम गेम प्लेज एवरी वीक. ऑल्सो अगर आप देखना चाहते हो हाउ ओपन वर्ल्ड गेम्स ऑफ 2024 गोइंग टू लुक लाइक तो क्लिक ऑन दिस थंबनेल. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गेम ऑन गाइस, स्टे अवे फ्रॉम द पायरेसी अनलेस यू वांट टू गेट ट्रोल्ड ब्रूटली.